Hi everyone, welcome to my channel. ମୁଁ ଓଡ଼ିଆରେ ପଢ଼େଇବି ଡାଟା ସାଇନ୍ସ। Hi everyone, welcome to my channel. ମୁଁ ଓଡ଼ିଆରେ ପଢ଼େଇବି ଡାଟା ସାଇନ୍ସ। Hi everyone, welcome to my channel. ମୁଁ ଓଡ଼ିଆରେ ପଢ଼େଇବି ଡାଟା ସାଇନ୍ସ। Hi everyone, welcome to my channel. ମୁଁ ଓଡ଼ିଆରେ ପଢ଼େଇବି ଡାଟା ସାଇନ୍ସ। Hi everyone, welcome to my channel. ମୁଁ ଓଡ଼ିଆରେ ପଢ଼େଇବି ଡାଟା ସାଇନ୍ସ। Hi everyone. Hello, welcome to my channel. आज ମୁଁ ଓଡ଼ିଆରେ ଡିପ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଆଉ ଏଆଇ ପଢ଼େଇବି। हेलो वेलकम टू माय चैनल। ମୁଁ ये चैनल ଓଡ଼ିଆରେ ଡେଟା ସାଇନ୍ସ ମେସିନ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ और ଡିପ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ପଢ଼େଇବି। ତେଣୁ ମୁଁ ସାଇମଲ୍ଟେନିୟସଲି ନିଜେ ପଢ଼ିବି ଆଉ ଯାହା ବି ପଢ଼ିବି ଓଡ଼ିଆରେ ତାକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟ୍ କରିକି ଲେଖିବି। ଯେମିତିକି ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଆମେ ଯଦି ଯିବା ଏଇ କୋର୍ସକୁ, ହଁ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଟର୍ଚ୍ଚ ଫର୍ ଡିପ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ପଢ଼ୁଛେ। ତେଣୁ ଦେଖିବା ଏଇଟା। Hello, Moto. Do the model. Relationship is between x and y because we've coded this formula. So let's do one thing. चलो गूगल कोलैब को ଯିବା ପ୍ରଥମେ। पाइटर्च वर्कफ्लो चलो ये बोलिए। बेसिकली ये नोटबुकटा मु क्रिएट करथिले आमर मशीन लर्निंग और डेटा साइंस डीप लर्निंग जहाँ भी वर्तमान ये पर्टिकुलर वीडियो रे हमें पढ़ा ये मुझे नोटबुकटा क्रिएट करथिले। जमती देखिपे समस्त देखु तो ये पाइटर्च वर्कफ्लो वीडियो लिखाई सेटा आम ये कर इम्पोर्टेंट लाइब्रेरी गुड़ा भी इम्पोर्ट गोटे कम करिया चलो गिटहब को जाइए यार सोर्स कोड डाउनलोड करता गिटहब जब सोर्स कोडटा डाउनलोड करता this PC D drive ठीक है। अच्छा मैं डी ड्राइव को जो डी ड्राइव गोटे फोल्डर अच्छे आम माई प्रोजेक्ट्स ये क्लोन करदा गुड आम पाखे सब आमर
अरे यार भूल गया गोटे काम करिया क्लोन रिपोजिटरी का ठीक है ओपन फोल्डर को आसिले अपडेट ही नहीं आईडी आसला ना क्लोन रिपोजिटरी क्लिक कले ये आम यूआरएल टा पेस्ट कर परिबा कौन लगे क्लोन रिपोजिटरी ये यूआरएल टा पेस्ट कर दियो हिट एंटर करो तापर जाइए फोल्डर सिलेक्ट करो पहला दिस पीसी माय प्रोजेक्ट्स ये सिलेक्ट करो गोटे क्लोन है आम ओपन करवा
here. But so let's continue. Our repo पर्यंत टाइम नौ क्लोन होगा लगुच बहुत बड़ रेपो कम करिया ओके स्ट्रीम ठीक चलची you won't always know that in the... First we need to import the import. Remember how... And the... game of two parts. It's along. Representation. I've got a nice pretty picture that describes that. Machine learning, a game of two parts. Let's refer to our data. Remember, data can be almost anything. These are our inputs. So the first step that we want to do is create some form of numerical encoding in the form of tensor numbers. Y is the dependent variable. But forget about this for the time. So for now, we'll just keep the capital, not capital. Parameter is something that a model learns. So for our data set, if machine learning is a game of two, something that a model learns. So for our data set, okay, these are the libraries you need to import first. Let's from import torch. Torch is our PyTorch library. Okay, import torch, then import. What else? Okay, from import torch. Sorry, from torch import NN. NN contains all of Python's building blocks for neural networks. Okay, yeah, obviously I'm a neural network create kariya. So from torch import NN. Now a NN library used for neural networks. Okay. से तार जहाँ भी कमेंट लिखिए हमें हमारा अलग कमेंट लिखिए तापरे इंपोर्ट मैटप्लॉट ऑब्वियसली प्लॉट करिए अपने जहाँ भी ग्राफ वगैरह इंपोर्ट मैटप्लॉट लीव डॉट pyplot as plt ओके ए लाइब्रेरी टा हमर इंपोर्ट हेगा होला से तापरे एठी गोटे टॉर्च रो वर्जन टा देखुछि हमें भी देखि दवा टॉर्च मतलब मोर एथि टॉर्च इंस्टॉल नाही इंस्टॉल करिया पड़ियो ओके टॉर्च इंस्टॉल अच्छे ओके एवरीथिंग इज सेटअप चला बुझिया Let's do it. So create known parameters. So we know these numbers, but we want to build a model that is able to estimate these numbers. How? By looking at different examples. So let's create some data here. We're going to create a range of numbers. Start equals 0 and equals 1. We're going to create some numbers between 0. Why is it taking so much time?
चलो 1, and they're going to have a gap. So the gap is going to be 0.02. Now we're going to create an x variable. Why is x a capital here? Well, it's because typically x in machine learning you'll find is a matrix or a tensor. And if we remember back to the fundamentals, a capital represents a matrix or a tensor, and a lowercase represents a vector. But in our case, it's going to be a little confusing because x is a vector, but later on, x will start to be a tensor and a matrix. So for now, we'll just keep the capital. View the first 10 of x, and we'll view the first 10 of y. We'll have a look at the length of x, and we'll have a look at the length of y. Weight hochi 0.7, bias hochi 0.3. But on they are Wonderful. randomly assigned. So we've got some values here. We've got 50 numbers of each. This is a little confusing. Let's just view the first 10 of x and y first, and then we can have a look at the lengths here. Plane, x, length, y. So what we're going to be doing is building a model to learn some values, to look at the x values here and learn what the associated y value is and the relationship between those. Of course, we know what the relationship is between x and y. So, मैं explain करची इटे कौन होची, okay? चलो हम आमोटे आपको जो है basically गोटे weight initialize करची. Weight and bias. What is weight and bias? Okay, cause weight होची 0.7 and bias hoji 0.3. So what is weight and what is bias? Weight jete bele ame gote supervised learning re mostly jete bele am pakhre output given thai mane am pakhre input achi x ro value, x ro multiple feature achi kimba gote feature achi, x ro value given achi ame y predict kariba ku chahu je tahale ame x रे किछटा वेट और बायस ऐड कला पर हमको y रो वैल्यू मिलेबो. ओके, सेटा लिनियर रिग्रेशन रो एप्लीकेशन राइट अप्लाई है जी. आगु गले हमें भल डिटेल ले जानिबा. चलो वेट होची 0.7, बायस होची 0.3, तापर स्टार्ट 0, एंड होची 1, स्टेप होची 0.02. और स्टार्ट एंड किछ नै हमें गोटे रेंज क्रिएट करूचे x रो वैल्यू और y रो वैल्यू पे. बेसिकली स्टार्ट होची 0, एंड होची 1. व्हाट इज 1? ओके, तापर स्टेप होची 0.02. 0.02 रो गैप रे क्रिएट होवा हमरो वेरिएबल्स 0.02. एटा देखि बात 0.0, 0.2, 0.4 है कि 0.10 जाए अच्छे. मैंने 0. कितने जाए अच्छे 0.8, 10, 12, 18. चलो इतने कंफ्यूज नहीं, प्रिंट करके देखना. एक्स रो वैल्यू होची टॉर्च डॉट अरेंज स्टार्ट एंड स्टेप. हम स्क्विज कौन करची एक्स रो वैल्यू होची टॉर्च डॉट अरेंज गोजे स्टार्ट करो देन एंड करो तापर स्टेप नियो. ठीक प्रिंट कला पर हम एक्स प्रिंट करके देखिए केमते होची. ओके, अरेंज रो स्पेलिंग भूल अछि ना. ओके, एक्स प्रिंट करके देखिए. ओके, से 0.0, 0.2 ऑब्वियसली मैंने 8.8 जाए कर देला. अपन यदि अनस्क्वीज करवा व्हाट डज इट डू अनस्क्वीज रे के गोटे पैरामीटर बोधे मिसिंग अछि कौन होजी डायमेंशन 1. ओके, डायमेंशन 1 डायमेंशन 0 करके देखिए. ओहो बुझली, ओ सीए तार इंडे सॉरी डायमेंशन चेंज कर दो माने अब तळकु आसीबे सब. ओके, बेसिकली इट सेज कि 0.0
पॉइंट ए इंडेक्सिंग आसो माने जो सेपटा हम एमती 0,1 2 3 4 5 0,5 फास्ट कौन आसला जदि आम एटा जदि डायमेंशन 0 करवा बाय डिफॉल्ट जोटा सी आसूची गोटे इंडेक्स रे सी आसूची एमती सी आसूची एमती 5 सेव करके देखिए एक्स डॉट सेव ओके 1 5 obviously 1 5 डायमेंशन 1 कर दवा 5 1 हो जाउछ कहीं प्रिंट करिया तो डायरेक्ट या भितर 5टा एलिमेंट आसी जाउछ भितर कमा नथिला अब कमा आसी आमर रेपो क्लोन हो गला गुड थिंग आमको सब जिनस मैनुअली टाइप करिया पड़ोनी पाइथन वर्कफ्लो এটা হচ্ছে फाइनली आम VS कोड ओपन हो गला तापर ए गोटे काम करवा ब्रो कस्टम माने किसी काम नहीं छाड़ आमर एमती भी एटा किसी रन करार ना आमर तो गूगल कोलैब हम ओके आमर एक्स वैल्यू हो गला वाई वैल्यू आम गोटे काम करें से कपी पेस्ट करदा हम तो बुझीगले कौन हो कौन नहीं
x ର value ଆସିଗଲା y ର value ଆସିଗଲା x କେତେ ଆସୁଛି ଏଠି ଦେଖିବା x ର value ଏତେ କଣ ପାଇଁ ଆସିଲା अच्छा ମୁଁ 0.2 कर ଦେଇଥିଲି କି ସେଇଥିପାଇଁ ଆଉ 0.02 ଏବେ ଠିକ ଅଛି x ର value ଦିଆଗଲା y ର value ଦିଆଗଲା ଆମକୁ ଏଇଟା ବାୟସ ବାହାରିଛି ଓକେ because we've coded this formula here. But you won't always know that in the wild. That is the whole premise of machine learning. This is our ideal output, and this is our input. The whole premise of machine learning is to learn a representation of the input and how it maps to the output. So here are our input numbers, and these are our output numbers. And we know that the parameters of the weight and bias are 0.7 and 0.3. We could have set these to whatever we want, by the way. I just like the numbers 7 and 3. You could set these to 0.9, whatever. The premise would be the same. So, and what I've just done here, I kind of just coded this without talking. But I just did torch A range, and it starts at 0 and it ends at 1, and the step is 0.02. So there we go, 000 up by 0.02, 0.04, and I've unsqueezed it. So what does unsqueeze do? Removes the extra dimensions. Adds an extra dimension. Daniel, you're getting confused here. So if we remove that, we get no extra square bracket. But if we add unsqueeze, you'll see that we need this later on for when we're doing models. Wonderful. So let's just leave it at that.